Hello, everyone. Good morning, fellas. And like you have celebrated 77th Republic Day, है ना? And उसके बाद हम यहाँ पे हैं for our newspaper analysis. Yes or no? Hmm. So, a very good morning after Republic Day. है ना? जब तक हम बात कर रहे हैं, जब तक हम we are discussing, तब तक अमेरिका में, चाइना में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं. राइट, द प्रॉब्लम्स आर सिंपल. उन्हें लग रहा है कि इंडिया ईयू का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा. यस, दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि अमेरिकन सोच रहे थे कि वो हमें डोमिनेट कर लेंगे. न्यूज लेके डूड, चल. सो हेलो दक्ष, हेलो ऋषपर्णा, है ना? सो वी गॉट दिस पर्टिकुलर न्यूज. Yesterday we saw our 77th Republic Day, and I think majority of people who understand law, majority of people who understand constitution will believe that it was 26th of January 1950 when we got real independence. Yeah, right. So yes, kind of we celebrated real independence, क्योंकि जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपके साथ होता है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको बहुत ज्यादा empower करता है. I mean, imagine the British era, like when you were writing it, the government is doing wrong work and you are in the jail. Then come Constitution written by our Constituent Assembly, led by Dr. Rajendra Prasad and leaders like Dr. B.R. Ambedkar, Pandit Nehru was there, Sardar Patel was there, Maulana Azad was there, and there were tons of mentors, forefathers were there, who actually commonly gave us this power that we can actually question our government. We can actually question those whom we elected to do good work for us. So it was the real independence we got. And I think I believe that we should not let anyone compromise this independence. Yes. Every day we should practice our rights, whether that is right to equality or right to freedom, right to life, liberty, or any other particular right. And we should ask question for those who are responsible. Uh, we should ask, we should be together following all our fundamental duties. And we should talk about the directive principle which government should work on. So it's a very important day, I believe. And है ना? Yes, you guys are one of the most important, what we can say, element of this freedom. I mean, जितने भी हमारे founding forefathers थे, they were the one, majority of them were barristers, lawyers. They were aware about the fundamental rights. They were aware about the other things जो एक आदमी को इंसान की तरह ट्रीटमेंट देने के लिए हेल्प करती है. So I believe कि ये जो चीज है ये आपके पास रहे एंड आप उस पे हेल्प करें. ओके, सो क्या कहना है? इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर डेली कवरेज पढ़ना डेफिनेटली नहीं आया होगा. नॉट द ई पेपर इज देयर, इज ई पेपर इज देयर इस पे. ओके, I don't get the mail. Sure, this is 27 January paper, not 26 January. बच्चे, ये 27 जनवरी का ही द हिंदू है, इंटरनेशनल एडिशन है. यू माइट नॉट गेट सम ऑफ द एडिशंस इन योर होम और ई पेपर्स. लाइक देयर आर सम, लाइक द हिंदू ने भी अपने वेबसाइट में ये चीज लिखी है कि आज कुछ एडिशंस नहीं आएंगे, बट बिकॉज ऑफ नेशनल हॉलीडे, यस्टरडे वाज अ नेशनल हॉलीडे, बट वी गॉट आवर इंटरनेशनल एडिशन, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, चलो. So let's start our day after praising our kino with important news. So all of you are aware about India and EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, राइट? ये कल साइन हो चुका है. एंड लाइक पीएम नरेंद्र मोदी वाज देयर, अर्सुला वन डर लैंड वाज देयर. शी इज द EU कमीशन प्रेसिडेंट. देन एंटोनियो कोस्टा वाज देयर, जो कि काउंसिल प्रेसिडेंट है यूरोपियन यूनियन काउंसिल के. एंड इट वाज a kind of प्रॉपर, है ना, लीगल. अभी EU की लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होगा.
these are Indians, I think. Not Americans or Russians. चलो, सो मार्केट एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, बहुत सारी चीजें आप पहले भी बात कर चुके हैं, थोड़ा बहुत आज भी बात करेंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज. 77th रिपब्लिक डे, यस और नो? एंड साथ में ऑपरेशन सिंदूर, रिपब्लिक डे, डेमोक्रेसी वगैरह वगैरह. दे हैव शेन, लाइक हमने एक पर्टिकुलर झांकी जो है वो उसकी भी दिखाई, ऑपरेशन सिंदूर की भी. थोड़ा सा ये एक अच्छी चीज रही है. देन कनाडा, यूएस चाइना टेंशन. यस, Canada was trying to get into this. Uh, Indian Air Force Squadron, Rafale, MiG-29, SU, Jaguar, है ना? this like ये सब इंडियंस हैं. पड़ोस में क्या चलता है, किसको क्या बुलाता है, दैट इज डिफरेंट यहाँ पे ना. So there is this particular tension between India, US, sorry, Canada, US and China on the trade. ये एक वो था. Then कोलकाता के वेयर हाउस में आग लगी हुई है, तुम्हें पता है, I guess. 7+ डेड हैं. फॉर्म न्यूज तो नहीं आ रही कितने हैं, बट हैं. देन दिस पर्टिकुलर एमपी में एक सोशल बॉयकॉट चल रहा है भाई. यस, फॉर लव मैरिज. आई मीन, कल हम राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहे थे. And today, like after there is this particular village in Ratlam district and MP, which announced the social boycott for the love marriage. So social economic boycott if any family agrees to have a love marriage, a marriage with consent of their children. And मतलब जो न्यूज़ थी उसमें लिखा हुआ था, families, those families are involved in this particular thing. जो मैरिज बाय चॉइस या जो भाग की शादी करते हैं इलोपमेंट वाले उसमें. एंड देन उसके बाद ग्राम सभा एंड बाकी चीजें, पुलिस वगैरह एक्टिव हुई. सो यहाँ पे आर्टिकल 14, आर्टिकल 20 ने, सॉरी, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 एंड, हाँ, ये तीनों तो कम से कम वायलेट हो रहे हैं. ठीक है. देन फार्मर प्रोटेस्ट स्टार्टेड ऑन इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल. यस, 2026, सॉरी 2025. इसमें फार्मर प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है. तो ये एक और न्यूज़ था. देन गुड न्यूज़ फॉर टुडे वाज फ्रॉम कर्नाटका. They have established a gig workers board. Hmm. Yes, gig workers welfare board by कर्नाटका. इस पे थोड़ा सा लंबा डिस्कशन करेंगे, है ना, कि कैसे 1 to 5% एग्रीगेटर पॉपुलेशन को वो लीड करते हैं. Uh, don't tell me, like even in the modern families and modern places as well. तो वो बहुत सारा प्रॉब्लम. And then we got another big news from UGC bill, and there is a class protesting against it. Equity वाला part. हम दक्ष डिस्कस करेंगे क्या है. यस, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो, आज के उसमें है अपने एजेंडा में. ठीक है. तो दीज वर द मेजर न्यूज. अपार्ट फ्रॉम दिस, कल जब मतलब आप ट्विटर खोलते हो तो ट्विटर में एवरीथिंग वाज either meme or people were telling us about how the difference from 1950 to 2026 took place. I got one very good Twitter thread in which they said how the social and political system leads to different kind of amendments. तो वो एक अच्छा वो था. And I think we should actually follow those particular राइट थिंग. मतलब वो जिस तरीके से उन्होंने लिखा हुआ था, या जिस तरीके से वो थ्रेड था,
इट वाज ग्रेट। मतलब जिस तरीके से पहला अमेंडमेंट आया, जिस तरीके से सेकंड आया, देन मूविंग ऑन टू वन बाय वन एंड वी गेट इनटू द लास्ट अमेंडमेंट, देन रीसेंट अमेंडमेंट्स क्या कह रहे हैं, प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स क्या है। इट वाज अ गुड थ्रेड। मैंने उसको बुकमार्क करके रखा है, इफ आई गेट अ चांस ये बनाने की कोशिश करेंगे, एंड इट वाज ग्रेट। सो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स हैव डिस्कशन। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हमने ऑलरेडी बात कर ली थी कि इट वाज 2007, है ना, जब से ये डिस्कशन शुरू हुआ था। 2007, एंड 2007 से लेके अब तक एक लॉन्ग नेगोशिएशन, लॉन्ग डिस्कशन करने के बाद फाइनली वी फाइनलाइज दिस पर्टिकुलर इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। Yes, free trade agreement क्या होता है? In which two parties are allowed to trade freely in each other's territory. And freely in the sense कैसा नहीं कि फोकट में। There are tariffs, there are particular taxes जो कि relatively lower हो जाते हैं. Accessibility is more to the markets, right? And they both seeks what we can say uh, future. They both sees the major particular what we can economic togetherness, economic cooperation. So some of them, है ना, calling it a mother of uh, all deal. They're calling it mother of all deal because yes, class already started by 8. Mother of all deal, that is what we're calling it. And because of the population representation, the more than one third part of the global economy and a lot of different things. So yesterday, our Prime Minister, the European Union leaders, जिसमें chief हैं, जिसमें parliament के वो हैं head हैं, they all were together. They signed the deal and they announced it very properly. सो अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो 23rd of January अपन ने जब लास्ट डिस्कशन किया था, तो 23rd of January को फाइनल हो चुका था, डॉक्यूमेंटेशन अप्रूव बाय द बोथ साइडेड, करेक्ट। एंड 24th January, 25th January was the time जब Ursula von der was a part of our she was visiting India, and then finally they announced it together. Now next step जो होगा वो होगा, the text will undergo the legal scrubbing, that is legal vetting over the next 5-6 months, and the formal signing is anticipated by the mid 2026. So most probably जुलाई अगस्त के बीच में जो है वो फाइनल साइनिंग हो जाएगी। नाउ की हाइलाइट्स जो हैं and जो मेजर कंसर्न्स हैं, उन दोनों पे हम बात करते हैं कि क्या है कहानी। जो की हाइलाइट्स है उसमें सबसे पहले तो है भाई ऑटोमोबाइल। Yes. So India has agreed immediately to slash import duties on European cars. Those are priced over 15,000 euros. हाँ, but है ठीक है. You guys are hoping for uh, car, German car, right? European standards. अगर वो महंगी है तो जल्दी तुम्हें राइट। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें 110% की जो वो होती थी इम्पोर्ट ड्यूटी होती थी, दैट विल come down to 40. So that will help you got like your vehicle, your supercar, dream car for sasta. They excluded the domestic interest to protect the domestic interest. They excluded the electric vehicle from the duty cuts for the first 5 years only, not for the all the time. Sensitive agriculture and dairy sectors are also excluded, राइट, टू प्रोटेक्ट फार्मर्स। तो जो एक्सक्लूजन है वो मेनली डील करता है डोमेस्टिक सेक्टर्स, इससे डील करता है डोमेस्टिक सेक्टर से, जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं लगती हैं, राइट। फॉर एग्जांपल जो फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, जो डेयरी है, उस पे पहली चीज है। सेकेंड वन इज ईवी फॉर नाउ नेक्स्ट 5 इयर्स, क्योंकि ईवी एक ग्रोइंग मार्केट है, एंड इंडिया में भी एंड यूरोपियन यूनियन में भी। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इन यूरोपियन यूनियन people are buying EV because they want to protect environment, and we are buying EV because petrol is getting expensive. But we are buying EV. Yeah, that happened with me. Like one of my like
uncle, he was like, we should buy an EV. So I was like, wow, great initiative, uncle. You should actually uh, start it for like environment. And you started thinking about environment. Like, नहीं यार पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है. So then I realized कि अभी इंडिया ईयू में थोड़ा सा डिफरेंस है. They should impose 200% on Thar and especially Creta. See, I don't have any problem with the Creta. I have Creta in my family. Like that car. I mean, not that much, but I like that car. But I have problems with Thar. I have problem with Fortuner. I have problem with this Thar Rocks. I have problem with Scorpio also. Because कार महिंद्रा especially महिंद्रा is one of my favorite brand और जिस तरीके से ब्रांडिंग की जा रही है I mean remember that time when people were doing stunt from KTM, the people who are ruling car breaking rules, they are worse than those people. So yes, I agree with you that I don't have problem with the vehicle. I have problem with the attitudes of the owners. Right, I like car. I drove that particular vehicle for long and I love it. But people are not good. Okay, so let's see what India gains from this deal. थोड़ा सा वापस आते हैं. इंडिया का गेन क्या होना चाहिए? So India is expected to receive zero duties, access for textile, leather, jewelry, and marine products. So हमारे पास एक टेक्सटाइल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है. सो टेक्सटाइल है, उसके अलावा लेदर है, वी हैव मरीन प्रोडक्ट्स, we have jewelry. We are going to get a 0% duty, a zero duty to access that particular market. That is a gain for India. Right. Moving on. What professional mobility seen in this particular deal is पहला तो ये है कि फ्रेमवर्क क्रिएट किया जाएगा, है ना, कि इंडियन प्रोफेशनल्स इन स्टूडेंट टू द ईयू ये कैसे बेहतर किया जा सकता है. सो दे आर गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉपर फ्रेमवर्क for accessibility of European Union's education, professional places, professional sectors. तो that is one thing कि यहाँ से वहाँ जाके जॉब करना आसान हो सकता है. राइट. एंड बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर ट्रेड हमने बात भी की थी कि डिफेंस के बारे में भी बात हो रही है एंड सम अदर पर्टिकुलर थिंग. तो इफ दिस स्टार्टेड गेटिंग वेल इन लाइन, then the further scope will have defense, security, strategic partnership, energy cooperation. यहाँ पे थोड़ा सा ये particular part जो है वो रुका हुआ था. So this particular deal is going to have a very good impact on both the sides, European Union and Indian economy. So these are some particular major highlight. And I have read, like I have heard one of the expert in economy, and they were like, if this goes well, actually जो यूरोपियन यूनियन का मेजर कंसर्न है इस समय, that is what we can say, chaotic decision making by the US. तो वो जो पर्सनल फेवर्स, पर्सनल गेन्स यूएस से मिलते थे, विच आर मेनली लाइक बेसिकली डिपेंडेंट ऑन यूएस डिसीजंस, वहां पे एवरीबडी कैन गेट अ न्यू पर्टिकुलर चांस. Yes, if India, with India, we can do it. We can go for the China, we can go for the other third world countries. From there, we can get accessible market and we can get good opportunities, and we should not rely economically on the American aspect as well. So, not only for India, but European Union also knows this very well that they need such kind of deal. You have seen the World Economic Forum, where the people have started talking about the economic independence, the strategic independence, lesser dependency on America of NATO. So, yes, it might help other countries as well. So overall, if you will see the trade volume, let's get into the stats. तो ओवरऑल ट्रेड वॉल्यूम में अगर बात करें तो EU is one of the largest, what we can say, trading partner. The bilateral trade is approximate $190 billion. Yes, if I'll talk about 2024, 2020, 5 year. So if we are having $190 billion trade, that means it's huge. And we can improve the situation and condition, it can grow further. Second, uh,
एज आई सेड कि क्या प्रॉब्लम थी सो उन्होंने लिखा हुआ था अपने उसमें आर्टिकल में दैट इज व्हाट आई एम कोटिंग यू द डील इज सीन एज द मूव टू डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन away from China and mitigate the impact of high US tariff rate which is imposed on India. And similar goes with the European Union as well. Okay, India has trade and economic partnership uh, separately with the European Free Trade Association, that is EFTA. तो वो अलग है, and that includes Iceland, Liechtenstein, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, जो कि मार्च 2024 में इफेक्ट में आ चुकी है, मतलब साइन हो चुकी थी, अक्टूबर 2025 में इफेक्ट में आ चुकी है. सो दैट इज डिफरेंट एंड ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज डिफरेंट. दक्ष स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी में हेल्प दिस, है ना. डॉलर के साथ जो इंडिया का इंडियन रूपी का जो पर्टिकुलर लड़ाई झगड़ा that can only be solved with improvement in export. First thing, because majority of countries accept dollar because they are also doing trades in dollar, right? So if we are improving our export, then definitely वो हमें help करेगा. So yes, if in case of this particular deal, India is improving their export part, definitely it's going to help, right? तो वो बिल्कुल वो करेगा, help करेगा. चले, moving on to the next question. Canadian PM denies free trade agreement plan with the China after Trump tariff warning. You know, I respected Mark Carney for that particular speech in World Economic Forum. Then this particular fella came and is like, "Yeah, I will impose 100% tariff on Canada if they are doing free trade agreement with the China." Right? And again, थोड़ी सी इज्जत का कोई. According to the statement like given by the Makani, we have no intention to doing a free trade agreement with China or any other what we can say no market economy. What we have done with China is to rectify some issue that developed in the last couple of years. तो उनका सिंपल ये कहना है कि भैया हम कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे इश्यूज थे जिसे हमने रेटिफाई किया. एंड चाचा ट्रम्प का क्या कहना था? China is successfully and completely taking over the once great country of Canada. So sad to see that happen. I mean, you have taken over the once the great country of America, and you are like killing your own people. You are killing the other people. You are abducting the other president. You are like threatening the world for the next level war. And उसके बाद तुम कह रहे हो कि ऐसा ऐसा. So what exactly is so Canadian Prime Minister like Canadian Prime Minister had discussion with the China and what they wanted कि भैया कुछ चीजों पे रेक्टिफाई दो. वी डोंट हैव स्टिल लाइक वी स्टिल डोंट हैव करेक्ट डेटा की किस चीज पे बात हुई है, बट अब एक एक करके बात करते हैं. तो जनवरी 24, हाँ, ट्रम्प जो यूएस प्रेसिडेंट है उन्होंने थ्रेटन किया कि दे विल इम्पोज 100% टैरिफ ऑन द कैनेडियन गुड्स and he accused the Canadian Prime Minister Mark Carney for turning Canada into a drop off port. Yes, drop off port for the cheap Chinese good to enter the US market. और ये एक्विजिशन गलत भी नहीं हो सकता बिकॉज क्यों कनाडा से तो ऐसा नहीं सारा जा सकता. In the January, Mark Carney met with the Chinese Premier Xi Jinping and to establish a new strategic partnership. Again, this new strategic partnership क्या है क्या नहीं है इसमें कुछ खास वो नहीं था except they have reduced some trade barriers. Canada cuts the tariff on Chinese electric vehicles from 100% to 6.1% and capped the 49,000 unit like to get the 49,000 unit annually. China agreed to lower the tariff on Canada on the canola seed and the what we can say meat from 85% to 15% and granted Canadian free visa travel. That was the something जो कि इनके उसमें deal हुआ था strategic partnership that they calling it. And Trump was like no 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 this is not something कि जो कि हो सकता है ऐसा वैसा. And they also call it like USMCA जो है यूएस मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट जो है ट्रेड एग्रीमेंट जो है
उसके बाद इस टाइप के पर्टिकुलर एक्शंस या स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात करना गलत है। सो अमेरिका ऑल्सो थ्रेटन कनाडा कि भाई ये भी एक चीज है जिससे हम तुम्हें हटा सकते हैं। 100% टैरिफ तो लगाएंगे ही, राइट। टेंशन धीरे धीरे करके बढ़ी। अल्टीमेटली लाइक क्लैरिफाइड कि भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का कोई वो नहीं है। वी हैड डिस्कस सर्टेन कंडीशन, मार्केट इकोनॉमी, राइट, एंड वी जस्ट वांटेड टू हैव अ बेटर इम्प्रूव्ड ट्रेड, पर इसलिए हमने किया। और ऐसा कुछ नहीं है ना। ट्रम्प ने वो गोल्डन डोम ये वो पता नहीं, he's just like once you have like switch on the Trump and he won't shut up until unless there is a disaster, राइट। सो ये था ओवरऑल फैशन में जो फॉर नाउ द कंडीशन इज US and Canada they are on top, but they are not going to have such kind of tension क्योंकि Americans know Canadians are Canadian important and Canadians know कि Americans are important. So let's hope for the best. Not we are not getting another front. Though like Trump ने आते से ही बोला था Canada should be the 51st state of America. So ये भी हो सकता है कि बहाना करके निकल रहे हैं। स्टेट न्यूज में आज कुछ खास नहीं था एक्सेप्ट वो अपन गिग वर्कर वाली बात करेंगे, राइट। तो स्टेट न्यूज में कुछ ऐसा धमाकेदार नहीं है। लाइक एवरी state had their celebration on the 77th Republic Day. Everyone had their stance on the democracy, central state relation, etc. तो उसी उसमें चल रहा था। Then this particular thing came into the picture. राइट। सो वो खाप पंचायतों का जो टाइम था इसमें विच बायकॉट या पूर्ण तरीके से जो वो कर देते हैं अपन इग्नोर कर देते हैं। फ्रॉम टेक्स यू ऑन, भाई मत पूछो, यू ओनली लिव वंस नहीं, तुम्हारे चक्कर में बहुत सारे जो है वो वंस भी लिव नहीं कर पा रहे हैं। Swamp Village announces a boycott to the families whose member marry by choice. So, I mean, there is particular 26th of January where we got right to equality, right to freedom, right to life, liberty. And then comes the news कि एमपी में रतलाम में एक विलेज में बायकॉट किया गया उन फैमिलीज को जिन्होंने अपने मेंबर्स को फैमिली मेंबर्स को अलाउ किया है मैरी बाय चॉइस। सो यू फेल इन लव विद समवन, you want to get married, your family is agrees, you got married, you make a family. Villages were like, no, 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 in our village this is not allowed. If you're marrying your kids with their their choices, their consent, not at all allowed. Yes, उसके बाद धीरे धीरे जब माहौल वो हुआ तो लोकल रिपोर्टर्स जो थे है ना, उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया एंड धीरे से दे वर लाइक यू नो देयर इज नो ऑफिशियल पर्टिकुलर थिंग लाइक दिस पंचायत की तरफ से और एनी अदर, एंड बट माहौल तो था। दैट इज व्हाट वाज वन ऑफ द बेस्ट शॉकिंग न्यूज ऑन द इंडिपेंडेंस सॉरी रिपब्लिक डे। क्या कर सकते हैं। नाउ दैट वाज द न्यूज आई वाज टॉकिंग। कर्नाटका गवर्नमेंट टू सेट अप अ गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड। 31st of December से, राइट, जो भी चीजें स्टार्ट हुई, जो भी डिस्कशन स्टार्ट हुआ, whether that is जोमेटो के फाउंडर के थ्रू जो गिग वर्कर्स हैं उनको कुछ गलत कहना, गिग वर्कर्स की अपनी डिमांड होना, देन दिस पर्टिकुलर स्टेज जहाँ पे वो 10 मिनट्स डिलीवरी वाली टैगलाइन जो थी, राइट, उसको हटाना, ऐसी बहुत सारी पर्टिकुलर चीजें हुई ना। अल्टीमेटली कर्नाटका गवर्नमेंट वन ऑफ द better steps, they have decided to build like a platform that is based on gig worker welfare board. This is going to be a proper act, so that will be called as Karnataka Platform Based Gig Worker Social Security and Welfare Act 2025, and it is primary administrative authority, right, to responsible for the welfare, registration, and social security of the gig workers in the state. Okay, is Ratlam, Ratlam is a good city. It's modern. Ratlam is a good city. It's a border city between India and MP and Rajasthan. I visited there one, two times. Yeah, right. One time I visited there for some work for the tribal people, understanding their culture with one of my Gurudev. And second time I visited was to visit the state of Sailana. Yeah, there is a king in Ratlam near Salana state. So I wanted to visit his state, so I went over there.
The people are good, welcoming. It's not a very modern state, like city, but the food is good. People. I don't see like people were critical, but they were happy, welcoming. So ये जो हुआ है, I don't know क्यों हुआ है. Let's see. Let's come to the point. First, let's talk about the structure of the board. Right. सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर होगा. Second, there are going to be five government representative. Yes, they might be, they will include the state labor minister, right? Secretary Department of Labor, IT, Commercial Tax, others हो सकते हैं. But the labor minister is going to be part of it. So five representatives from the governments. Then there are going to be four gig worker representatives. They might be nominated by the individual representing the interest of the workforce. Then we have the aggregator representatives. So they are going to be gig worker. Then we are going to have four from aggregators. That is what we can say. Companies के side से. Yes. So it, like for example, Swiggy, Instamart, Zomato, Zomato, Swiggy, Instamart, Zepto. These are the companies which are working on this particular sector. So they're also going to have representatives over there. And the last one are two members from the civil societies. Yes. Independent members, that what we are going to get, with mandatory representation of a woman as well. So civil society में भी और women जो workers हैं उनके लिए भी यहाँ से एक दो particular members होंगे. तो overall fashion में the board will have actually 15 members, right? मुझे थोड़ा सा particular इसमें numbers में problem थी. This again, this is my personal opinion, right? Five members are government, four members are from company, and इनके बीच में कुछ साठगांठ हो गई. I mean, they should like stand together. Then कुछ भी हो जाए गिग वर्कर्स के लिए जो बना वेलफेयर बोर्ड है उसमें हो सकता है कि चीजें ना हो. So I believe that gig worker and companies and what we can say government representative like gig workers and company they are having equal representation, very good, but government should have a lesser representation. Civil society will have more, should have more, so that they can have equal chances for both the parties, whether that is company or the workers. So यहाँ पे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है. I'm not like again this might be uh, you might have some different opinion, but मेरे हिसाब से तो है थोड़ा सा. Now, registration. So process क्या होगा, बोर्ड का फंक्शन और मैंडेट्स क्या होंगे. सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो लाइफ एंड एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस है उसकी गारंटी जो है वो स्टार्ट होती है. देन यू गेट हेल्थ एंड मैटरनिटी जो पर्टिकुलर benefits हैं you can start over there. Then in case you are doing long है ना particular thing you can get the old age protection as well. यस, ये पर्टिकुलर बोर्ड का क्या है विजन है कि soon we are going to make schemes for the life and accidental insurance, health benefit and maternity benefit, old age protections, and what we can say. One more thing was there was disabilities. Yes, if somebody through accident or any like prolonged illness or during the old age they also like they got some sort of disability, then also they are going to help. So yes, this is the vision to make scheme like this board functioning properly, and they are soon going to make these kind of schemes. So then they also talk about algorithmic transparency. Yes, uh, they want to make sure that companies disclose their method of determining the work allocation, ratings, payout, and prevent discriminations. हाँ कि भैया if you are not providing someone a good like a good amount of deliveries, why? What are the ratings? How it's going to act? एंड सो उसके लिए ट्रांसपेरेंसी जो है उसको पहले ही बात कर ली गई है. अपार्ट फ्रॉम द स्कीम लाइक नेक्स्ट जो स्कीम विजन है उनका स्कीम बनाने का उसके पहले ही द ट्रांसपेरेंसी इन द एल्गोरिथम, हाउ यू आर अलॉटिंग वर्क, हाउ यू आर रेटिंग comes out, how you are having some other particular
वेज कि पे आउट कैसे आ रहा है एंड अदर थिंग, एंड डिफरेंट वर्किंग आवर्स में क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो सब कुछ. Then they are going to have a grievance uh, addressal mechanism in which if somebody, like either from the companies or from the worker side, if they are having certain issues on anything, they can address their grievance on that particular platform. Akash, thanks buddy. I hope you enjoy this. So yes, ये एक अच्छा इनिशिएटिव था कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से. आई बिलीव इफ लाइक प्रॉपर रिसर्च की जाए एंड प्रॉपर रिसर्च के बाद अगर देखा जाए तो the central government can also form such kind of regulating authority or at least a board जिससे गिग वर्कर्स का अपना जो वो है पार्ट है वो थोड़ा सा प्रॉपर है. फॉर एग्जांपल आई वाज लाइक आई once used this particular rapido. Okay, so a bike taxi, and the person that came to me was one of the inspiring cricketer. He was playing for local team, and he was from a small village. So the family can afford only the training part and the residential part, but the rest, like food, diet, some other equipment he needed. So he get into this particular Rapido, so he can, after practicing for like 7, 8 hours, get a good sleep. He work for 2, 3 hours and then again get a good sleep. So it was good. But what if, like, उसका यही कहना था कि what if I get into some accident and I got to, like, my dreams will be compromised. So it's like, you don't think negative, follow the rules, wear the helmet, and let's hope for the best. And any accident, it's not necessarily can end your career. Then I gave him the example of Rishabh Pant as well. थोड़ा सा होता है ना, टीचर वाला इंस्पिरेशन आ ही जाता है कि हाँ चलो इंस्पायर कर देते हैं इसको. बट अगर ऐसा होता है तो देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग इट, नॉट डूइंग इट फॉर द पार्ट टाइम जॉब, but there are people who are actually like got help from these particular situations, these kind of work. तो ये अच्छा हो सकता है. On paper, that looks good, but enforcement is always an issue. हाँ, सरकारों के साथ यही एक मेजर प्रॉब्लम रहा आज से नहीं दोस्त. हो गए 70-80 साल से यही देखते आ रहे हैं कि like problem is this, that they make certain very good schemes and the execution में फिर वो क्या ही बोलो. खैर, छोड़ो. मूविंग ऑन, ये सेम चीज चल रहा है, एवरीबडी इज डूइंग सेम. स्टेट न्यूज से लेके एंड दूसरी चीज उसमें. हाँ, वन मोर न्यूज, अपन ने सेंसस के बारे में बात की थी, सेंसस 2026 2027. सो मेथड टू काउंट द कास्ट ड्यूरिंग द सेंसस नॉट yet decided. Clarity like to be by July, says official. यस, यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है कि अभी हम जो कास्ट है ड्यूरिंग द सेंसस, उसको कैसे डिसाइड करेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में हम प्रॉपर फॉर्मुलेशन, प्रॉपर सेटअप करके जो है वो जुलाई के टाइम पे आएगा, हमें क्लैरिटी आएगी. कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर कैन ही लाइकली टू विजिट दिल्ली इन द मार्च. भैया, कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर है दैट इज गोइंग टू बी in India in the March. Again, reasons are same: economics, mutual support, and it's going to be one of the best decisions because India and Canada are not having very good relation from last 2, 3 years. Just to get time say that Nijjar assassination and other thing. So उसके बाद से if he's visiting and he's hoping for some strategic and economic aspect, it's going to help building our relationship back. ठीक है? Yes. So again, Swiss think tank ने माना है कि Indian Air Force achieved the air superiority over Pakistan in Operation Sindoor. इसने अब जाके माना है. We know it, right? Yes. I mean, Swiss think tank is thinking they are going to do research on this. That's like, dude, seriously, we know this. कि हमारे पास एयर सुपीरियरिटी थी, एंड दैट्स completely fine to have certain what we can say damages in the battle. That is one thing I like. Like, if you are a warrior, the scar should be your, what we can say, part of your life. So that is completely fine. But yes, we know कि जो हमने किया है वो कितना होता. हाँ, we had certain superiority and we have like Rafale, we have SU.
Sukhoi 30, MiG-29s, and some other particular, we got the superiority, right? And we were superior. इसमें कोई वो नहीं है. So yes, thank you, Swiss Tank. We don't need your opinion, right? uh, okay, चलो next वो करते हैं. Moving on to the and here, according to our media, we were at the oh भाई almost अफगानिस्तान ईरान के बॉर्डर तक पहुंच गए थे. तुम पीछे होता. So our president says military might meets the heritage of the nation on the Kartavya Path. Then they pay tribute to the 150 years of Bande Mataram. हमने ये सारी चीजें डिस्कशन कर ली है. And constitution is a protecting shield for citizen rights, says Rahul Gandhi, the leader of opposition. Right. And BJP slams Rahul for not wearing Assamese gamosa, ये वो uh, गमशा गमसो गमोसा जो भी है. And कल एक controversy हुई थी that our leader of opposition was sitting on the third row, which is not at all welcoming. A leader of opposition is equally important as prime minister. That is what I believe. Yes, because if there is no opposition, the government may act like dictator. So yes, I need opposition. I need a good opposition. So ये मुझे थोड़ा सा disrespecting लगा, but that's completely fine. India, China are friends, partners, say Xi Jinping. बिलीव करना है क्या? आई मीन शी जिनपिंग का ये कहना है कि चाइना एंड इंडिया आर वेरी गुड नेबर्स, फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स, राइट? यस, गुड नेबर. आई मीन तुम तुम किसी के नेबर, किसी की गुड नेबर नहीं हो सकते. तुमने चमगादड़ लगा के पूरे दुनिया को परेशान कर दिया था, राइट? सो यू कैन नॉट से दिस. बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट. इन फ्यूचर वी कैन गेट अ गुड नेबरिंग कंट्री, सो दैट हमारा जो वो है रीजन है वो ज्यादा स्टेबल और ग्रोथ में रहे. Then US and India shares historic bond, says Trump. सेम थिंग. ये देखो देखो न्यूज की प्लेसमेंट देखो. इधर इंडिया चाइना फ्रेंड्स है, इधर यूएस इंडिया शेयर्स हिस्टोरिक बॉन्ड, राइट? आई मीन ये प्लेसमेंट भी इनने सही की कि दोनों जगह तुम हंस सको प्रॉपर्ली. लाइक आफ्टर हैविंग दिस नंबर ऑफ पेजेस, यू शुड गेट लाइटन बाय दीस काइंड ऑफ न्यूज. चलो आगे बढ़ते हैं. हाँ, uproar intensify against the new UGC equity regulation. Yes, several groups have alleged bias against the general category student, while anti-caste activist says the new regulation do not adequately protect SC, ST, OBC student from discrimination. So, यहाँ पे दोनों साइड से पब्लिक खुश नहीं. यस, अभी तक उस बिल के प्रॉपर जो पर्टिकुलर रेगुलेशंस हैं, अगर हम उनकी बात करें तो धीरे धीरे करके वो करते हैं. कुछ नोट्स बनाए मैंने. जो पीआरएस होती है एंड सब अदर पर्टिकुलर एक्सपर्ट्स, जो क्या कहते हैं जेन्युइन एक्सपर्ट, पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं, पॉलिटिकल कमेंट्री में बहुत ज्यादा वो करता नहीं, बट व्हाट दे थिंक उनसे मैंने नोट्स बनाए थे. कल ही मैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ रहा था. सो यूजीसी बिल 2026, राइट? करते हैं अपन डिस्कशन करते हैं क्या होता है. University Grant Commission Promotion of Equity in Higher Education Institute, right? Regulation 2026. So, this is the term जिस पे बात हो रही equity, which was notified on 13th of January and become effective nationwide on January 15th, right? And these regulations are designed to eliminate the caste-based discrimination and promote the social justice in higher education. यस, सबसे पहले बात करते हैं की फीचर्स जो है रेगुलेशन में, उसमें क्या है. सबसे पहले तो मैंडेटरी इंस्टीट्यूशनल बॉडीज. यस, एवरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट HEI must establish an equal opportunity center EOC, right, to support disadvantaged groups, and an equity committee to specifically investigate discrimination complaint. So एक तो ये कि भाई सब इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, देन देयर इज सपोज टू बी अ कमिटी जिसे ये इक्विटी कमिटी कहेंगे, राइट, टू इन्वेस्टिगेट
the discrimination against the anyone जो भी कंप्लेन करेगा। तो ब्रॉडेड स्कोप जो है इसका ये कहता है कि द डेफिनेशन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, राइट, इसको थोड़ा सा वो किया गया है, डेफिनेशन को क्या किया गया है, थोड़ा सा बढ़ाया गया। नाउ एक्सप्लिसिटली जो एस सी एस टी ओबीसी जो होते हैं उनको इंक्लूड किया गया है, बट कास्ट बेस जो पर्टिकुलर जो कंसर्न्ड है प्रॉपरली फ्रॉम द एस सी एस टी प्रोटेक्शन इन ओबीसी स्टूडेंट की तरफ से, वो ये है, caste based discrimination is not just based on SC, ST or OBC. There are like people who are having facing discrimination within the categories as well, right? And this is what you know. So उनका ये कहना है कि जो discrimination की definition है वो और ज्यादा क्या होनी चाहिए थी, broad होनी चाहिए थी, बट ना, उन्होंने इस चीज पे काम नहीं किया है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लाइक जो भी पर्टिकुलर चीजें भी आई हैं उसमें और थोड़ा सा हो, बट एक्सपर्ट्स का ये मानना है that with the discrimination definition we had earlier and the discrimination definition we had now under this particular regulation, it has already been like broadened. Yes, they actually talk about the uh, how misconceptions of discrimination between the categories is being what we can say ended, कि भाई ऐसा नहीं हो कि आप मिस कम्युनिकेट करो, उसको मिसकंसेप्शन में लेके जाओ। सेकंड, इन्होंने एक स्पेसिफिक टाइमलाइन जो है उसको डिसाइड किया है। सो इट्स सेइंग कि वंस द कंप्लेंट इज रिसीव्ड द इक्विटी कमीशन मस्ट meet quickly, resolve the matter within the fixed time frame, typically 15 days for the resolution report. So अगर किसी इंस्टीट्यूट में एक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कंप्लेन आई है, तो जो कमेटी है दैट शुड मीट इमीडिएटली, right? They should start investigating, they should start talking about it, and they should file the first report at the 15 days earliest, right? Then there is an aspect of accountability. The head of institution is now held legally and directly responsible for any failures in implementing these regulations. तो जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट होंगे वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होंगे इफ एनी काइंड ऑफ फेलियर ऑन दिस रेगुलेशन इज कैन बी सीन, राइट? तो दीज आर द फीचर्स जो है। देन दे आल्सो सेट पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस, राइट? थोड़ा थोड़ा करके बात करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन, if an institute fails to go with the new bill and new guideline, they may be get debarred from the UGC financial scheme, जो भी फाइनेंसेस मिलते हैं दूसरी चीजें मिलते हैं। They can be prohibited from offering degree online distance learning program or any kind of thing. Then removal of the list, अगर आप यूजीसी के अंडर इंस्टीट्यूट में रिकॉग्नाइज्ड हो और आपके यहाँ से बार बार चीजें खराब हो रही हैं, then they are going to remove your name of your institute from the UGC Act. Prakash, my name is Shobham. Right? Yes. So not only these features, but also the penalties against the discrimination. If you are failing, if an institute is continuously failing, then right now क्या है controversy? जो controversy है उसकी बात करें, जनरल कैटेगरी क्या कह रहे हैं? So the general categories, people are like critically arguing that the rule lacks safeguard against the false and malicious complaint. Yes, उनका ये कहना है कि if somebody puts a false complaint, then what? है ना? The thing is कि उनका ये कहना है कि if somebody falls like put a false complaint, there is a that may lead to the pre-assumption of guilt, right, for the upper caste student. तो उनका यही मानना है कि if somebody put a false complaint, तो पहले से ये मान लीजिए कि this person is discriminating, this person is having a discriminatory nature. तो उनके पास कोई सेफ गार्ड नहीं है, and they are not talking about the safeguards for the false complaint, right? There are some legal challenges as well. Petition already Supreme Court में लग चुकी है challenging this particular regulation.
and specifically arguing that limiting the discrimination definition of caste-based discrimination to SC, ST, OBC group is unconstitutional and it includes the other from the protection. यस, उनका ये मानना है कि राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है ये, क्योंकि अदर्स के साथ भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं। फिर जिस तरीके का बैकलैश देखने को मिल रहा है, मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स की बात कर लूं, है ना? जिस तरीके का बैकलैश देखने को मिल रहा है, देयर आर हाई चांसेस कि या तो ये लॉ विथड्रॉ किया जाएगा, या देयर आर गोइंग टू बी कमिटीज एंड डिस्कशंस एंड देयर इज गोइंग टू बी अ मिडिल। यस, है ना? सारे के सारे स्टेक होल्डर्स, एस सी एस टी, ओबीसी, जर्नल्स, इन सबको बुला के देयर शुड बी अ टॉक एंड देन देयर इज गोइंग टू बी अ व्हाट वी कैन से solution, middle path, or withdrawal, because no political party wants to have any, because this is the situation जहाँ पे दोनों साइड से प्रॉब्लम है। if somebody is doing caste based politics उसको भी डर है, if somebody is not doing caste based politics और वो जनरल कैटेगरी या उनके उसमें जाते हैं उनको भी डर है, so upper caste, lower caste, anything that is going to be part. From my side, yesterday was our Republic Day. डॉक्टर अम्बेडकर जो है उन्होंने तरीके बताए थे किस तरीके से कास्टिज्म खत्म किया जा सकता है। एंड वंस द कास्टिज्म इज ओवर, देन शायद हम इस पर्टिकुलर डिस्क्रिमिनेशन वाली चीजों पे लड़े भी नहीं। यस, इट्स लॉन्ग पाथ, इट विल टेक टाइम। 80 साल हुए हैं हमारे देश को आजाद हुए लगभग, एंड इन 18 years वी आर नॉट आउट ऑफ इट। तो यस, इट माइट टेक अनदर 80 years। इंडिया में पब्लिक थोड़ी सी स्लो है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट इन कमिंग ईयर्स। जब हम अगले साल ऐसा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हो तो उस टाइम पे वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन, एंड आई बिलीव दैट नो ह्यूमन इज सुपीरियर और inferior. We are all are born from the same biological process. We are part of the same country. We are part of the same society. We praise same gods. We follow same religions. Then there is no such thing जहाँ पे discrimination होना चाहिए. But है, चल रहा है, right? Yes. एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम, अच्छा, जो बिल के स्पेसिफिक पार्ट है उसकी बात कर, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन प्रॉपर्ली ओबीसी टर्म, सॉरी, ओबीसी टर्म वाज इंक्लूडेड इन डिस्क्रिमिनेशन। यस, मतलब एससी एसटी तो होता था, बट ओबीसी एक्सप्लिसिटली इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये भी ध्यान रखना कि दिस इज एक्चुअली गोइंग बेटर। एंड जो इंक्लूजन है वो तो है ही है, जो डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड्स हैं उसको भी डिफाइन करने की कोशिश की गई है, विच विल इंक्लूड कास्ट, religion, race, gender, place of birth, right, and disabilities. These all are part of now definition. तो definition मेरे हिसाब से थोड़ा तो broaden की गई है, but again कुछ जो particular उनके concern है वो भी सही है। Equal opportunity center, ये सारी चीजें अपन वो कर चुके हैं। There is going to be a national monitoring mechanism as well for UGC कि किस particular उसमें कहाँ पे क्या चल रहा है, and they are supposed to meet at least twice a year, and there are other particular thing, uh, such kind of regulation. I feel Belgium has final system of reservation. Okay, खैर ठीक है। What is UGC? University Grant Commission is one of the institution that deals with universities, their functioning and their well-being, and was what we can say inaugurated uh, मतलब ड्यूरिंग 1952, 1952 में ये बन गई थी, एंड 1953 में जो हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना ए के आज़ाद, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। केम अंडर सम कमीशन व्हिच वाज लेड बाय सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आवर फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, राइट? इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इट हैज इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, जो वाइस चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं, 10 मेंबर्स होते हैं, एंड ये एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी है जो अलग अलग तरीके से डील करता है। ठीक है, चलो। There's a need for some changes, but again, no one want the vote bank to get upset. Yes, it might be there. So vote bank is the major thing जो आजकल चल रही है, तो let's hope for the best. मतलब see, discrimination is not at all welcome, चाहे वो किसी भी फॉर्म का हो,
है ना? I mean, you can see discrimination within your family. हाँ, मतलब there was a time when females didn't get education properly क्योंकि उनको 22-23 साल में शादी करके भेज देना है. Boys used to get education so that they can earn and they can feed family. So within the family, like irrespective of your caste, religion, place of birth, you can see such kind of problems within the family. तो जब तक वो basic reforms within the family से शुरू नहीं होता है, तब तक we cannot say कि क्या होगा, क्या नहीं होगा. Right? So let's start with editorials. Playing hide and seek with the employment guarantee. ये अच्छा editorial था. Please make sure कि पढ़ें. We have discussed tons about the मनरेगा, VBG, रामजी Act. तो मैं वापस डिस्कस नहीं करूंगा, बट पढ़ें. March of the Republic. While celebrating achievement, the government must not ignore the challenges. ये भी अच्छी चीज थी. India's biggest climate gap would be language. Yes. Moving on, ये वाला थोड़ा सा पढ़ लेना इंटरनेशनल अफेयर्स में कि वेनेजुएला ऑयल कोलैप्सेस इन फ्लैंगरिंग क्यूबा इनटू क्राइसिस. यस, जो वेनेजुएला के साथ चाचा ट्रम्प ने किया उसके बाद क्यूबा जो है वो भी एक एनर्जी क्राइसिस में जा रहा है क्योंकि क्यूबा वाज वन ऑफ द मेजर इंपोर्टर ऑफ द दिस वेनेजुएलन ऑयल. तो एक बार देख लेना ये अच्छा एडिटोरियल था. देन भैया सोने के रेट बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, ये तुम्हें पता ही है. समटाइम्स होता है दक्ष, होता है. You cannot, like, the person who is 70, 80 year old, you cannot change them, but we can change ourselves, right? I have friends from all the culture, community, caste. We are like very good friends. We never talk about these things. Huh. We discuss about how we can eliminate caste. Yes, I mean, they are well-educated people. We discuss about how we can eliminate the religious discrimination and other things. Right? So, yeah. खैर, मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड न्यूज की दुनिया क्या कहती है. दुनिया तो रोज बनती है. म्यांमार में जो मिलिट्री बैक जनता पार्टी है वो जीत गई है इलेक्शन में. हाउ नॉन प्रिडिक्टेबल. हाँ, लेट्स बी सीरियस. हमने तो बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं किया था कि म्यांमार की जो मिलिट्री बैक पॉलिटिकल पार्टी है वो जीतेगी बिकॉज पीपल वर सो एंग्री विद द मिलिट्री कि हमें पता ही नहीं था ये चीज. देन आई रियलाइज कि पीपल आर सो हैप्पी विद द मिलिट्री रूल दैट दे एक्चुअली वोटेड इन फेवर ऑफ दोस. Enough order, says Venezuelan interim president amid the US pressure. Yes, Venezuela की जो interim acting president है Rodriguez, she said कि she had enough orders from the Washington in reference to the pressure from the US. Enough orders from Washington in Venezuela. Let Venezuela politics resolve their internal conflict. Enough of the foreign powers. So this is one particular thing जो थोड़ा सा change है, but I'm not sure कब तक चलेगा. वेनेजुएला की जो पर्टिकुलर एक्टिंग प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला कि ठीक है आपने जो कर दिया. But now we are let us resolve our internal problems. And then former Bangladesh police chief gets death penalty for the protest crackdown. क्या हुआ था आपको पता है तो उसे बताने की जरूरत नहीं है. Security agreement with US 100% ready to be signed, said Ukraine. Yes, Volodymyr Zelensky का ये कहना है कि जो document for the security is 100% ready. And after 2 days, the talks involving the representative from Ukraine and US and Russia will start. And let's hope for the best. We came out of that particular war. Getting a no Eurofind survey to speak with one voice against Trump. ये एक अच्छा वो आर्टिकल था पढ़ना कि किस तरीके से यूरोपियन यूनियन यूरोपियन कंट्रीज जो है कलेक्टिवली साथ में आके ट्रम्प को नो बोल पाए. देन मैच देख रहे हो अगर तो तुम्हें पता ही होगा क्या चल रहा है. आई मीन दिस गाय इज आई मीन भाई जो मैंने मैच में देखा है ना वो देयर इज दिस पर्टिकुलर मीम इन विच समबडी वाज लाइक कि भाई ये क्या हो रहा है भाई. न्यूजीलैंड पीपल वर एक्चुअली फीलिंग द सेम थिंग. भाई ये क्या हो रहा है मतलब दिस गाय was on the field and all he was doing was just hitting sixes. All he was doing was just
making runs. He was there for just 20 balls and he delivered a milestone of 40 ball 50, which is like a second fastest after Yuvraj Singh. तो मैच was fabulous भाई साहब, मजा आ गया. तुम अगर मैच नहीं देखते हो मत देखो, एग्जाम के बाद देखना शुरू कर देना. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर. रेडी गाइस? यस. चलो. सो आज बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं मिले बट लेट्स मेक सम क्वेश्चंस. राइट. The EU-India Free Trade Agreement negotiation concluded in January 2026. दक्ष मेरा एग्जाम नहीं है. राइट. मैं देख सकता हूँ. है ना? तुम्हारा एग्जाम है, तुम नहीं देख सकते. चलो. The India EU Free Trade Agreement negotiation concluded in January 2026 were originally launched in which year? किस साल ये जो पर्टिकुलर फाइनल नेगोशिएशन जो कंप्लीट हुआ है ईयू इंडिया का मुक्त व्यापार समझौता. यस दैट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हिंदी वर्जन. ये कब शुरू हुआ था नेगोशिएशन? 2004, 2007, 2010, 2012. ऋषपर्णा का कहना है बी दैट इज 2007. दक्षिण है सी दैट इज 2010. एनीवन एल्स? वेर इज साहिल टुडे? सो यार. The correct answer is B. Yes, it was started in 2007 during the era of Dr. मनमोहन सिंह. और वहां से निगोशिएट होते होते वो फाइनल जाके अब कंप्लीट हुआ है. ठीक है, ध्यान रखना ये चीज. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. The EU-India FTA must be ratified by which body after the legal scrubbing and translation? इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके द्वारा रेटिफाई किया जाएगा आफ्टर द लीगल स्क्रबिंग एंड ट्रांसलेशन? ऑप्शंस आर यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन पार्लियामेंट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. बताएं. कम ऑन fellas. किसके रेटिफिकेशन के बाद ये एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा? दक्ष का कहना है सी दैट्स यूरोपियन पार्लियामेंट. यशपन्ना वेरी गुड बच्चे लोग. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यूरोपियन पार्लियामेंट. यूरोपियन पार्लियामेंट की रेटिफिकेशन के बाद ये पर्टिकुलर स्टैब्लिश हो जाएगा. ठीक है. Ah, which constitutional values was repeatedly emphasized by the civil chief minister during the Republic Day celebration? राइट. ये हुआ भी है. रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में बहुत सारे चीफ मिनिस्टर ने एक टाइप की बात की है. एंड इनका ये कहना है कि कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है जिसे एम्फसाइज किया गया है. ऑप्शंस आर सेक्युलरिज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म, रूल ऑफ लॉ, फेडरल सुप्रीमेसी. बताओ. नो. ऐसा तुमने न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं होगा आज का, तुम्हारे पास आया ही नहीं. द करेक्ट आंसर इज सी रूल ऑफ लॉ. यस. दे वर टॉकिंग अबाउट रूल ऑफ लॉ. फेडरलिज्म का तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि तमिलनाडु के गवर्नर क्या कर रहे हैं, कर्नाटक गवर्नर क्या कह रहे हैं, उनके साथ चीफ मिनिस्टर के साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है. सो देर आर टन्स ऑफ डिफरेंट थिंग. बट कल के मतलब इवेंट में कल अगर तुमने टीवी भी देखा हो, थोड़ा बहुत ट्विटर भी फॉलो किया हो, तो उसमें रूल ऑफ लॉ के बारे में बात बहुत सारी हो रही. Moving on, the Karnataka platform-based gig worker Social Security and Welfare Act provides for a welfare fee on aggregators of. So वो welfare fees on aggregator कितने परसेंट है? Options are 0.5 to 1%, 1 to 1.5%, 2 to 3%, 5%. नहीं बेटा, अभी तुक्का लगाने वाली कंडीशन नहीं आई है. अपना पेपर अच्छा जाएगा. वी हैव लाइक इनफ टाइम टू प्रिपेयर. ठीक है. तो तुक्का नहीं. जागृत, आई थिंक नोट्स बनाना जरूरी है. If you cannot make all the notes, then I believe you should make at least those particular topics notes जिस पे हम discussion करते हैं लंबा चौड़ा. We don't discuss all the news, but we discuss those important news which are important for CLAT.
ठीक है, वेरी गुड गाइस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 to 1.5%. Moving on to the next one. How many members will the proposed gig worker welfare board in Karnataka consist of? So Karnataka के gig worker welfare board में कितने members होंगे? Options are 10, 12, 15, 18. बताओ मित्रों. That was the I guess structure. Government, gig worker, aggregators, civil society. So that is 10 plus 5, which is 15. Yes, याद करो. 5 from government. ध्यान से देखोगे अगर तुम. These are from gig workers, these are from companies, and these are from civil societies. Right? So total members कितने हो गए? 15 अपने पास. ध्यान रखना है चीज. The social boycott announced by the village panchayat in Madhya Pradesh primarily violates which fundamental right? किस फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार को वॉयलेट किया गया जब सोशल बायकॉट अनाउंस किया गया एक विलेज पंचायत में मध्य प्रदेश में? आर्टिकल 14, 17, 19, 21. ध्यान देने वाली बात यह है, द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट प्राइमरली वॉयलेट्स. ठीक है, सो सोच समझ के आंसर देना, बिकॉज वी आर डिस्कस कि आर्टिकल 14, 19, 21 तीनों वॉयलेट हुए. बताओ मित्रों. नो, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 21. कम ऑन, आप किसी को समाज से बहिष्कार करते हो, राइट? यू एक्चुअली बायकॉट देम फ्रॉम सोशली. ओके, सो दैट इज द लाइक फर्स्ट थिंग. आप यू हैव कॉम्प्रोमाइज द राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, बिकॉज सोशली that person is not acceptable according to your boycott, right? So first, primarily it violates Article 21, then right to equality, because we everybody is equal in the village, in the country. So you cannot do this. And then freedom of choice, कि भाई हमारी choice थी यार शादी करने की. यस, आर्टिकल 21. सो क्वेश्चन में एक वर्ड काफी कुछ चेंज कर देता है, सो उसको थोड़ा सा ध्यान रखा करेंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. द मध्य प्रदेश विलेज बायकॉट केस मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू विच सुप्रीम कोर्ट रूलिंग? मध्य प्रदेश को जो विलेज पंचायत बायकॉट केस है वो सुप्रीम कोर्ट की किस रूलिंग के क्लोजली रिलेटेड है? ऑप्शंस आर मेनका गांधी केस, शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केशव नंदा भारती केस और मिनर्वा मिल्स केस. है ना? ये तो तुम्हें पता ही होगा. मतलब कौन सा केस लगेगा, कौन सी रूलिंग लगेगी, अगर ये नहीं पता और बाकी पता है कि अदर्स क्या कहते हैं, तो आपको डेफिनेटली आंसर मिल जाना चाहिए. कम ऑन, टेल मी. The correct answer is B, Shakti Vaini case. You know Menka Gandhi case very well. You know Keshav Nanda Bharati case very well. You know Minerva Mills case very well. तो बचा वही ना कि ये तो यहाँ पे आके रुकेगा. सो व्हाई आई लाइक पुट दिस क्वेश्चन इज कि जिससे तुम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ो. ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं. The Canadian Prime Minister denied pursuing a free trade agreement with China mainly due to the obligation under which agreement? करेक्ट. किस एग्रीमेंट के ऑब्लिगेशन के अंडर द कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर डिनाइड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगेंस्ट चाइना? ऑप्शंस आर नाफ्टा, सीपीटीपीपी, यूएसएमसीए, डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट. नाफ्टा दैट इज नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. सीपीटीपीपी मुझे याद नहीं आ रहा है. यूएसएमसीए दैट इज यूएस मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट. ये इजी है, जल्दी बताओ, आई नीड इट. The correct answer is C. We discussed this, Rishpanna Bache, that USMCA was also there, US Mexico Canada agreement.
है ना? सो ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन यूएस, मैक्सिको एंड कनाडा। ठीक है? नाफ्टा ही यूएसएमसीए के नाम से आता है बाद में। नाफ्टा वाज फर्स्ट, लाइक उसके बाद इसको रिप्लेस किया गया। सो फॉर नाउ दैट इज यूएसएमसीए। चले, क्वेश्चन नंबर जो भी है ये, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स रिलेटेड टू द फॉरेन ट्रेड एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉल्स अंडर विच लिस्ट? सो वो विषय सब्जेक्ट जो कि फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल एग्रीमेंट के होते हैं, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किस लिस्ट में पाए जाते हैं? ऑप्शन है स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट, यूनियन या रेसिडुअल पावर। बहुत इजी है, जल्दी जल्दी आंसर दो। भैया फॉरेन एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट किस पर्टिकुलर लिस्ट में आएंगे? द आंसर इज यूनियन लिस्ट। एम आई करेक्ट? ऑब्वियसली यूनियन लिस्ट में आएंगे, है ना? बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन था यार ये तो। Next, the Electricity Amendment Bill 2025 protested against the farmers, mainly concerned with sector. राइट? जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है जिसके अगेंस्ट फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेनली किस सेक्टर से? वेरी गुड दक्ष, राइट, बिलोंग करता है? एग्रीकल्चर प्राइसिंग, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन, environmental protection or labor welfare. So if you can read the question properly and read the option properly, though you can answer this particular question. बताओ आंसर। Yes, power distribution and regulation. Very good, guys. So this was it for 27th of January 2026 after the Republic Day. Right. I hope you guys are enjoying sessions. I hope you guys are making good notes. I hope you like what we are doing. Right. So this is it for today. I wish you and all your loved one a good health, good mental health, and I'll see you in the next session. Till then, have a great day ahead. मजे करें, लाइफ में मस्त रहें एंड पढ़ाई में व्यस्त रहें। ठीक है? गुड डे गाइस। सी यू।